अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए देखते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें NNI न्यूज़ पर। सभापति जी, मैं आज आपके माध्यम से देश की संसद का ध्यान, देश की सरकार का ध्यान अपने 1 करोड़ उन कर्मचारियों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जो मैं समझता हूं पूरे देश की व्यवस्था को चला रहे हैं। सभापति जी, बहुत अफसोस की बात है, 2004 से एक नेशनल पेंशन स्कीम लागू हुई। उस नेशनल पेंशन स्कीम का परिणाम ये रहा कि जब कर्मचारी रिटायर होते थे तो सभापति जी 800, 1200, 1800, 4000 की केवल पेंशन उनके परिवार की सुरक्षा के लिए थी। उसके बाद सभापति जी पिछले 20 सालों से लगातार कर्मचारी आंदोलनरत रहे, आज भी आंदोलनरत हैं। उसके बाद एक नई स्कीम यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से पेंशन स्कीम लाई गई जो कि 1 अप्रैल से लागू होनी है। सभापति जी, बड़ा आश्चर्य की बात है, जिन कर्मचारियों के लिए पेंशन स्कीम लाई जा रही है वो कर्मचारी आंदोलनरत हैं, वो कर्मचारी नहीं चाहते इस तरह की पेंशन आए, क्योंकि इस पेंशन के माध्यम से कर्मचारियों के पूरे जीवन की कमाई और रिटायरमेंट के बाद उनके परिवारों का भविष्य आपके स्टॉक मार्केट में जा रहा है। स्टॉक मार्केट की स्थिति क्या है पूरा देश देख रहा है। सभापति जी, पूरे कर्मचारी चाहते हैं कि जो ओपीएस थी, पुरानी पेंशन स्कीम थी, वो पुरानी पेंशन स्कीम लागू हो। पुरानी पेंशन स्कीम ही एक ऐसा मात्र रास्ता है सभापति जी जो कि कर्मचारियों के परिवारों की सुरक्षा की गारंटी है। और मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो बिना कर्मचारियों के व्यापक समर्थन और सहयोग के नहीं चल सकती है। जनता के और सरकार के बीच का पुल है कर्मचारी। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने अपने लगातार चुनावी घोषणा पत्र में कहा कि जब समाजवादियों को मौका मिलेगा, चाहे प्रांत में चाहे दिल्ली की सरकार में, हम पुरानी पेंशन स्कीम लागू करेंगे। इसलिए सभापति जी, मेरी आपसे मांग है, केंद्र सरकार से मांग है कि कर्मचारियों का शोषण। Thank you, Speaker sir, for giving me this opportunity. I would like to talk about the long-pending issue regarding inclusion of Beda Budaga Jangam in the state of Andhra Pradesh into scheduled caste. Sir, as we speak, Beda Budaga Jangam is the most downtrodden community in our state, and these people are the people who sing folk songs called Burakadulu in our language. They are not even accessed entry into the villages, and they are called or welcomed into the villages only when there is a death in the village, just to entertain the departed by their songs. When living do not honor them, the departed honor these people, sir. And during 1976, Government of India has included them into SC category, wherein they had opportunities in education, employment, and also in welfare schemes until 2008. But then afterwards, after bifurcation, also our Andhra Pradesh, in the pretext of there are no Budaga Jangam in our state of Andhra Pradesh, these people have given OC category, sir, from SC. And they have lost all the opportunities. And also there was there was a committee. There was a committee in 2007. What is your demand, please? Yes, sir. There was a committee also. And the resolution was also passed by Legislation and Council of Ministers in Andhra Pradesh in 2019 and 2023. So what I request is this Beda Budaga Jangam people, they deserve all the respect, dignity, and also opportunities, sir. And I request the Social Justice Minister, because these people have been given SC category in the state of Karnataka, Maharashtra, Honorable and also Minister is sitting in Telangana. But why can't Andhra Pradesh be given this status, sir? So I request Social Justice Ministry to do some justice to Beda Budaga Jangam people of our state. Thank you, Honorable Member. Got your point. I wish to bring to your kind attention an issue regarding the AI technology of China named DeepSeek. Some questions were asked to the DeepSeek AI technology about Tibet being an independent country, but it seems that AI technology answered that Tibet has always been under the control of the Republic of China. I have a screenshot to prove the same. Then the DeepSeek technology was asked whether Uttar Pradesh was a part of India, whether it was asked Andhra Pradesh was a part of India. It gave a detailed answer that yes, it is a part of India. But when it was asked that the state of Arunachal Pradesh is a part of India, then the DeepSeek app refused to give any specific answer, and it said that, sorry, that's beyond my current scope, and let's talk about something else. This kind of answer comes after the Sino-India dispute, and that as Chinese ambassador had once claimed that all of Arunachal Pradesh is a Chinese territory amidst a military build-up.
the application of China refuses to address Arunachal Pradesh as a part of India. This seems very odd, especially when state of Arunachal Pradesh has been a part of India and the Constitution of India recognizes it so. But yet the Chinese mock India, calling it a southern Tibet. This is shocking, disturbing and lack of respect to India. The government of India and especially the External Affairs Ministry needs to issue a notice to the Republic of China for issuing such technology and AI applications which hurt the sentiments of Indian people. These kind of answers by a foreign technology has no place in India and should be banned and taken down. By refusing to accept the state of Arunachal Pradesh as a state of India, the AI application has hurt the sentiments of crores of Indians. Strict action needs to be taken against such technology and India has to answer back. The same technology also refuses to accept that Chinese army has entered part of India. So therefore, I request this concerned ministry, last 30 seconds, if the Indian government really belongs to the man who is 56-inch chest and out of 5.6-inch chest, then show the red eye to the Chinese and make them correct their mistakes. India should not use American or Chinese technology and should develop its own Indian AI technology. Thank you. Speaker. मुझे जीरो आवर पर माननीय सभापति जी बोलने का मौका दिया और मैं जो बोलना चाहता हूं इस देश के करोड़ों किसानों के मुद्दे पर मैं बात रखना चाहता हूं। पिछले दिनों कई बार ऐसा हुआ कि किसानों के जो डेलीगेशन हैं हमारे पास में आकर के मिलकर के अपने ज्ञापन दिए और मुझे अफसोस इस बात का है कि जो किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है उनको भी अपने कार्यों के लिए आंदोलन करने पड़ते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी इस देश की सरकार को, भारत की सरकार को सारी फसलों पर एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए और जो किसानों का, मैं कहता हूं कि सरकार जो है लोन तो सारे जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका माफ करती है, क्यों किसानों के लोन को माफ नहीं किया जाता? कोई भी किसान हो वो किसी एक धर्म से ताल्लुक नहीं रखता है, उनके लोन को माफ किया जाना चाहिए। और ये सरकार ने वादा किया था 2021 के अंदर कि हम कोई भी नया बिजली बिल अधिनियम नहीं लेकर आएंगे, तो इसमें उनका खासतौर से पॉइंट था कि कोई भी इस प्रकार का बिजली बिल नहीं आना चाहिए। माननीय सभापति महोदय जी, मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि मेरे संभल के अंदर भी किसान समाज के पूरे देश के अंदर रहते हैं, उनके साथ में भी बहुत बड़ा उत्पीड़न हो रहा है और जिस तरह से उनके साथ ज्यादती हो रही है और जिस तरह से उनके साथ कानून व्यवस्था के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है, मैं चाहता हूं कि इस देश की सरकार को सिर्फ ये कह करके कि वो प्रदेश का मसला है, इस चीज पे पीछे नहीं होना चाहिए, बल्कि संज्ञान लेना चाहिए इस देश के उन किसान भाइयों के लिए कि उनको आइंदा फिर से दोबारा से आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़े। थैंक यू। తెలంగాణ రాష్ట్రంలో వాల్మీకి బోయ వర్గాలను షెడ్యూల్ తెగల జాబితాలో చేర్చడం అనేటటువంటి అతి ముఖ్యమైనటువంటి అంశంపై ఈరోజు ఈ సభలో మాట్లాడేందుకు నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు అధ్యక్ష। బోయ వాల్మీకులు విద్యలో కానీ ఉద్యోగాల్లో కానీ మరి ఆర్థికంగా కానీ చాలా వెనుకబడి ఉన్నటువంటి పరిస్థితులను అనుభవిస్తున్నారు అధ్యక్ష। పురాతన కాలంలో వీళ్ళు వేటకు పోయేటటువంటి వాళ్ళు, ఈ రోజు వాళ్ళకి ఎలాంటి కులవృత్తి లేదు। బోయ వాల్మీకులు పక్క రాష్ట్రమైనటువంటి కర్ణాటకలో ఇతర అనేక రాష్ట్రాల్లో ఎస్టీలుగా గుర్తింపు పొందుతున్నారు, కానీ తెలుగు రాష్ట్రాలైనటువంటి తెలంగాణలో కానీ ఆంధ్రలో కానీ వారు ఇంకా వెనుకబడినటువంటి తరగతుల జాబితాలోనే ఉన్నారు। దీనివల్ల వాళ్ళకి చాలా అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది అధ్యక్ష। తెలంగాణలో ముఖ్యంగా 5 లక్షల మందికి పైగా జనాభా బోయ వాల్మీకులు ఉంటే ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా మా పార్లమెంటులోనే అత్యధిక శాతంగా బోయ వాల్మీకులు ఉన్నారు। సో వారిని ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలన్నటువంటి వారి యొక్క ఆకాంక్ష మేరకు గత ప్రభుత్వం, తెలంగాణ ప్రభుత్వం వారి స్థితిగతులు, ఆర్థిక పరిస్థితులను పరిశీలించడం కోసం చెల్లప్ప కమిటీని వేశారు అధ్యక్ష। సో చెల్లప్ప కమిటీ చేసినటువంటి సిఫారసులను పరిగణలోకి తీసుకొని అప్పటి తెలంగాణ ప్రభుత్వం శాసనసభలో ఆ కమిటీ సిఫారసులకు ఆమోదం తెలుపుతూ తీర్మానం చేసి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ప్రతిపాదనలు పంపడం జరిగింది అధ్యక్ష। ఆ రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే, కావున రామాయణం రచించినటువంటి వాల్మీకి వారసులైనటువంటి వాల్మీకులను నవభారత నిర్మాణంలో సాధికారత మరియు సమానత్వం వారు సాధించాలంటే గౌరవనీయులైనటువంటి గిరిజన వ్యవహారాల శాఖ మంత్రి గారు దయతో తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో ఉన్నటువంటి వాల్మీకి బోయలను ఎస్టీ జాబితాలో చేర్చాలని మీ ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాను అధ్యక్ష।
థ్యాంక్ యూ. Okay, madam. Shri Kangana Ranawat. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी. मैं हमारी सरकार की सराहना करना चाहती हूं कि उन्होंने जो सौभाग्य योजना है, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के द्वारा जो है समस्त भारत में खासकर रूरल एरिया में जो इलेक्ट्रिफिकेशन की है, विद्युतीकरण किया है, वो अत्यधिक उनका जो नेतृत्व है बहुत ही सराहनीय है. लेकिन साथ ही मैं उनका ध्यान जो है आकर्षित करना चाहती हूँ. हमारे मंडी में जो मेरी ऐसी कई विधानसभाएं हैं जहाँ पे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड के बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं, छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है, बहुत ही एक्सट्रीम वेदर रहता है और वहाँ पर जो पूरी पावर ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत ही पुअर है. उसके साथ ही ट्रांसफॉर्मर्स बार बार कोलैप्स करते रहते हैं और उसके कारण वहाँ पे वोल्टेज भी बहुत लो रहता है. थोड़ी बर्फबारी होती है या बारिश होती है सर, बहुत लंबे लंबे पावर कट्स लगते हैं. उनकी वजह से जो है लोगों का पूरा जीवन जो है ठप हो जाता है. कई बार तो कई हफ्तों तक बिजली नहीं रहती है. छोटे छोटे व्यवसाय जो हैं वो ठप हो जाते हैं. और ऐसी एक नहीं, सिराज, बंजार, आनी, कुल्लू जैसी बहुत सारी विधानसभाएं हैं. तो महोदय जी, मैं जो है हमारी पावर मिनिस्ट्री हो गई, जो हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड हो गया, उनसे मैं ये बहुत ही विनम्र अनुग्रह करती हूँ कि वहाँ पे जल्दी जल्दी जो है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की जाए. इन एरियाज में पार्शियल इलेक्ट्रिफिकेशन है और उसके साथ ही जो है दे शुड ऑल्सो स्ट्रेंथन जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क है, दे शुड डेफिनेटली स्ट्रेंथन दैट. और साथ में ही आई रिक्वेस्ट कि हमारे जो नेतृत्व का जो एक विजन है कि हर नागरिक को जो इलेक्ट्रिसिटी मिलनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, तभी हम लोग पा सकेंगे. धन्यवाद. Thank you. Thank you. Shri